go. तू ही है, तेरे को पैसा दे रहे तेरी एक्टिंग करने की, अच्छा है, करते रहे। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। थोड़ा है, टेंट्रम्स होंगे मेरे, मैं पहले से ऐसा हूँ। कॉन्फिडेंस मैन। बसीर बुढ़ा हो गया है। I'm not the only one, bro. तो हैदराबादी बिरयानी और मुंबई वड़ा पाव। तो भाई दो वड़ा पाव लेके आओ ना मेरे लिए। एक्स गर्लफ्रेंड जो घर पे आती थी, गरम मसाला देखी है? कैसे हैं आप लोग? आप रियलिटी शोज देखते हैं? अरे वाह। और टीवी शोज वो भी देखते हैं? क्या बात है। एक बढ़िया सा ब्लेंड मिलवाऊं आपको। बसीर अली आ रहे हैं आज हमारे साथ, जो कि रियलिटी शोज भी कर चुके हैं और आप टीवी शो कर रहे हैं। वेट नहीं हो रहा ना? मुझसे भी नहीं हो रहा। मैं हूं अमन गांधी और चलिए करते हैं सेट पे चर्चा विद बसीर अली। ओके बसीर, वेलकम टू सेट पे चर्चा। व्हाट्स हैपनिंग? कैसे चल रहा सब कुछ? हाउस लाइफ? हाउस कुंडली भाग्य? Thank you for having me here, firstly, Yeah, Aman. man. It's a pleasure Pleasure. to be here with you in the same frame. I've always looked up to your stuff and the life you bring to the screens, or your show, आपके character के साथ, the way you Thank play you, around man. with Very it, sweet is of you. absolutely commendable. Very sweet of you. Talking about me, Yeah. what would you want to know? Anything, man. Just tell me who Basir is. I mean, people who know Basir as an actor who is there in Kundi Bhagya. Right. He's as a spoiled brat और Leap के बाद एक नया चेहरा देखने को मिला है. But who's Basir in real life? I'll start with something really जो मुझे सबसे ज्यादा बोला गया है. My Yeah. friends and family जब उन्होंने मुझे as शौर्य कुंडली पे देखा, since ये मेरा पहला शो, पहला कैरेक्टर, पहला एक्सपीरियंस रहा है, people were like, तेरे को तू रहने के पैसे दे रहे लोग? I was like, what do you mean? They're like, it doesn't look different. Like Yeah. what I'm doing as Shaurya Yeah. is mostly like around 80-90% similar to Basir's real personality. I mean, हम बसीर को ही देख रहे हैं मतलब screen पे. Kind of. That's what I'm saying. Oh, मेरी man, मम्मी के this लिए तू ही है, तेरे को पैसा दे रहे तेरी एक्टिंग करने की, अच्छा है, करते रहे. Yeah. And first day perform करने के बाद I met Yeah, creative. and मैंने पूछा, मैम did you see what I did yesterday? आपको कैसा लगा? अच्छा था बेटा, मजा आया. But एक एडवाइस है, एक्टिंग मत करना. I was like confused, man. I was like, भाई मेरे को तो एक्टिंग करने बुलाया, बोल रहे एक्टिंग मत करो. So I was like, can you be precise? आप बोलना क्या चाहेंगे? Like, कैमरा पे दिख रहा है कि तुम एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, and what we want to bring in Shaurya, The natural we've bit of seen in it. your personality. तो Yeah. बस bring your personality. Yeah. So that made my job damn easy. From that day I was like, oh, बस बसीर वाला एटीट्यूड लेके घूम जाके बस बोल देना है. बोलना है. लाइंस याद रखना मेरे लिए थोड़ा वो होता था. When I was not an actor, I would always think कि भाई, if I'm shooting with like 5 people, उनके बाद मेरी लाइन, मेरे बाद उनकी लाइन, if I mess it up, embarrassment होगा, humiliation होगा, I can't do it. बहुत भागता था. पहले जो पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि Splitsvilla, Roadies, Ace of Space, Yes. and then Kundli happened. Yeah. There's one more show that happened in the middle. Whoa, So I what? did Roadies twice. Oh. So I did Roadies first in 2017 March. हाँ. Then एक महीने के गैप के बाद I went to Splitsvilla. हाँ. Same year 2017. उसके 2017 खत्म हुआ. 19 I did Ace of Space. Okay. 2022 I did Roadies Africa with Sonu Sood. It was his first show as a host. Oh. वो करने के बाद I was like, चलो अब बॉम्बे जाते हैं कि अब शायद कुछ करके देख ले. Because my mom was like, तुम 21 years के थे जब हमने तुम्हें ये सब करने दिया. Now हाँ. you're about 27, 28. Yeah. Family responsibility, Yeah. coming back, taking उसका क्या care करना of है? things. हाँ, बच्चे को बड़ा करके दुनिया के लिए छोड़ दिया क्या हमने? So I felt that and I was like, okay, give me a year or two, I'll go to Bombay and figure things out. And luckily I'm here. Things happened. Yes, sir. But difference क्या है with reality shows and now a fictional show? बहुत डिफरेंस है. मैंने 6-7 साल रियलिटी में सर्वाइव करके when I came to acting मुझे सबसे पहले ये हिट हुआ कि भाई I am just a drop in the ocean. Yeah. क्योंकि वहां पे I'd done a lot, I'd done a few Yeah. shows, now people knew me, my Yeah. personality and everything, but acting sphere में कोई मुझे नहीं जानता था. Hmm. They knew कि हाँ एक बसीर है, something like that, but यहाँ आके मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ा. Yes. तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था, but because I'm a go getter, मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है. It's like I can do anything at any point of time in my life. Confidence, man. Yeah, I think that works for me. It's my superpower. Confidence is my key. It takes me everywhere. जहाँ भी मैं बैठा हूँ आज, जो कुछ भी मैं करके यहाँ तक आया हूँ, I think it's because of the confidence I carry, How cool. and it worked out. How I'm cool, glad. man. But ये जो लड़ाई झगड़े और ये जो controversies और ये इतनी चीजें उछल के आती है रियलिटी शो से, with so many things happening around your personal and professional life, how do you keep your mental peace? मेरे लिए चैलेंजिंग था द फर्स्ट ईयर जो मेरा गया है यहाँ पे, बिकॉज समवेयर आई फील लाइक मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस लाने पड़े टू मेक दिस शो एंड एवरीथिंग वर्क प्रॉपर्ली. Work for you. Yeah, like I am someone who likes to be punctual. I'm someone who likes to maintain my time. I don't like to cause my professional life damage because of what's happening in my personal life. तो मैंने वहां पे सब कुछ होने दिया ताकि ये डैमेज ना हो.
तो yeah, I feel like there was a lot of changes I had to make. Personal life के sacrifices होते हैं, जैसे मेरी fitness की वाट लग गई है. Yeah, I Right. understand, man. 12 hours of working and then travel, let's say 14 hours. 10 किलो weight उतरा है bro. From the first day that I came as Shaurya, I was 82. I'm 72 and a half now. Wow. Can you beat that up? My base weight was 76. But abs आ गई होंगी उस वजह से. वो तो वैसे ही है. Yeah, Athletic. आवाज. It always works out, but खुद की एक होती है ना, I want to look like this. Yeah, And when of you course. know कि आप ऐसे दिख सकते हो, फिर अगर आप उससे कम हो जाते हो, तो फिर आपको मजा नहीं आता. And then breaks your confidence and you work on confidence. Exactly. And then I'm like, चलो personality ज्यादा flex करनी पड़ेगी. Yeah. अब acting पे ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा नहीं दिख रहा तो. And yeah, about that, acting पे ध्यान देने से like first few weeks में ही मुझे तालियां मिली भाई. हाँ. On set. Wow. कुछ performances के बाद मेरे co-actors और हमारे बाकी वाले लोग. It felt absolutely amazing. Yeah, man, it's a beautiful feeling when Yeah. the whole crew either laughs or just claps. अब आपका कैसा है? आप कॉमेडी वाले Yeah. सीन ज्यादा करते हो. Yeah. Shaurya is always angry. Yeah, exactly. मेरा हमेशा was like, मैं तुम्हें बोला कैसे? So that becomes like intense. तो उस इंटेंस परफॉर्मेंस के बाद if you get a clap, I'm like, अच्छा मैंने ढंग का ही किया होगा. मतलब मेरे को ऐसे दिमाग में आ जाता है कि नहीं, ठीक but किया एक सेकंड, अगर शौर्य बहुत ही गुस्से वाला है 90% of times and Basir is very similar to Shaurya, is Yeah. Basir also is an angry young man? Yeah, you can say that. Yeah? If you go back to my audition also, people found out things कि मैं वैसा था. Aggression was like the first mood and all of that. I've come a long way from that guy. Of course. But you can't forget the guy I was, right? तो activate करता है कोई तो फिर वो एकदम से आ जाता है. But I like being in this zone. I'm also like a very fun-loving person. I Yeah. like being around humorous people. Yeah, People yeah. can make me laugh. I'm very like, मैं खुद मानता हूँ कि मैं funny हूँ. अब लोगों के humor पे है वो क्या मानते हैं कि नहीं. उनका ह्यूमर खराब होगा, उनको समझ नहीं आया होगा. मैं भी जब गंदे जोक मारता हूं, जो समझ नहीं पाता है बोलता हूं तुम्हारा ह्यूमर हमारे बस की बात नहीं है भाई. जोक बहुत बढ़िया था, तुम्हें समझ नहीं आया होगा. बट That- जो हमने सोशल मीडिया देखा, तो वन थिंग दैट इज विच इज वेरी कॉमन इज दैट पार्टी एनिमल, दबा के पार्टी वार्टी करना पसंद है. सो इज देयर एनीबॉडी फ्रॉम कुंडली डू यू पार्टी विद? Yeah, actually, I have some party animals. Twinkle is Twinkle, someone हाँ, बता, Twinkle is super You know. fun. Yeah, I know her. And my stepmom on the show, Nidhi, Akansha Juneja. I'm telling you, Yeah. हम अगर if we sit with her to drink, she's gonna put us to shame. Yeah. I'm telling you, yes. Oh. तो काफी पार्टी वाले लोग हैं, but because of our routines and like 12 hour shifts, yeah. जब जिमी नहीं हो पा रहा, पार्टी क्या करेंगे? I know. But if not Kundli and if there's an off tomorrow, do you normally plan to do I want party? to sleep. Honestly, या ना, I जिंदगी want की to बदल sleep. जाती है मैंने टीवी करने के जिंदगी में बाद. रेस्ट के पीछे इतना नहीं भागा है जितना मैं शो पकड़ने के बाद I know. चाहिए ना. इंसान जिंदा है तो घर आया है, हाँ. खाया पिया, अपने फ्रेंड से बात की, फोन किया, घर पे Yeah. बात की. You want to be alive for those 4 Yeah. hours. Yeah. I'll tell you a small this thing. Yes, So I was please. in a relationship before I got in the show. तो अब वो तो बिना शो के चल रहा था ठीक ठाक. अब मुझे शो मिल गया तो मैं बिजी हो गया and all that. So who I was with used to be in my apartment only. तो अब चलो ठीक है, स्लीप ओवर का प्लान है. हाँ, आ जाओ स्लीप ओवर. मैं 9 बजे आया हूँ पैकअप करके घर. 10 बजे तक खाना वाना खा के फ्रेश हुए. चलो एक फिल्म लगाते हैं. टक से फिल्म लगाई. 11 बजे आई एम स्नोरिंग. Poor girl. 10 बार स्लीप ओवर के लिए आई. She looks at me fucking snoring, puts the blanket, takes her bag, goes back home. So I was like, yeah, these are the Bas sacrifices that been there. I'm sure you feel that. Been huh? there, man. Been there. मेरे को तो इतना सुनने में आता, तू अंकल जैसा क्यों हो गया है, bro? Yeah, I'm so glad to know I'm not the only one, bro. यार मैं नहीं हो गया. मुझे कितने लोगों ने बोला ये ना? बसीर But- बुढ़ा हो गया है. I I swear. mean, I understand, man. और ये sacrifices ना लोगों को दिखते नहीं है, Yeah. पता नहीं होते कि Yeah. as a man or as even a woman, if you're making these little sacrifices in your personal life, Yeah. उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है बाहर. नहीं है यार. Nobody's gonna be like, oh wow, तुमने बहुत अच्छा किया या तुमने ये किया हमारे शो के लिए. Nobody understands that. Talking about ex-girlfriend जो घर पे आती थी, man, I read a controversy somewhere. Since I didn't know you personally, I never asked. What the hell was that? You must have seen that she was on a reality show as well. No, I don't know her, honestly. So yeah, we dated for about a year, and because it was getting really difficult, I called it off. Okay. Back and forth बहुत हुआ and everything, and then she went to another reality show called Okay. Temptation Island. Temptation Island. Yeah. After that, everybody's seen a lot of what was shown on this on the show. I had no reason to stick around, but still because I'm a good person, I believe I have a good heart, and it's very pure. मैं grudges नहीं रख पाता. उसको humor समझ नहीं आया होगा. हाँ, मैंने कहा भाई, I can be your friend, but वो friendship भी बहुत toxic हो गई थी, तो I had to put an end to that as well. Okay, talking about parties, अभी तो आजकल time नहीं मिल रहा है, but once you're done with Kundi, or you know, if you get a break, Yeah.
अगर फैंस को पूछना होगा, मैं भी बहुत पार्टी करता हूँ बसीर, मैं भी मुंबई में रहता हूँ, पर कहाँ अगर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बसीर बहुत ज्यादा जाता है, जहाँ मुझे आई कैन स्पॉट हिम, और मे बी इफ यू कैन सजेस्ट पीपल सम गुड प्लेसेस, और वेयर डू यू पार्टी? I have been a DJ also. Oh. Last I took a chutti from Kundli, went to Goa, played for a night. Next morning I was back. What are you saying? Yeah. I always wanted to be, oh shit यार, ये मुझे करना है लाइफ में. Yeah, I play techno go, music. 3, 2, 1, go. Next time maybe if I'm flying Man, out, I'll let you know. Please take me. Pakka, Yes, pakka. 100%. Yes. That'll be fun. हाँ, so in Bombay I don't go a lot because पहले तो मेरा मूड ट्रैफिक में खत्म हो जाता है. I'm going to be damn honest about it. Yeah, मैं man, ready yeah, होके yeah. गाड़ी में बैठता हूँ, पहुँचने में 1.5 घंटा. I'm like take me back. yeah man. समझे Yeah, आप? I तो feel you, that's how yes. it is. But I have a new flatmate now. Then this guy is from Hyderabad and he Okay. was always into curating shows and making nice events happen. And So I- creative guy. Yeah, very creative guy and good parties he throws. तो जब से ये मेरे घर आया ना, ये मुझे वापस से बाहर लेके निकलने लगा है. And my life has gotten complicated because I'm single. I hope you read between I the don't lines. think it's complicated. Oh my It's God. like it's a new गरम beginning. मसाला देखी है? Yes. बस into 2 कर दो. बस that's all I could say. about it. मैं बोल रहा था कि जैसे परेश रावल होता गरम मसाला में, if you है, wanna है, घर keep में somebody, बैठा है. I can come if there are 6. Bro, you will spice it up. I'm telling you. Oh my God, I cannot imagine. Then all these cameras have to be placed in my house then मतलब for a regular daily soap. we were talking about you being a nice guest with us in this church, Right. and we were talking about you like with Basir you don't have to think anything. Yeah. He'll be honest, he'll be upfront, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है. तुम्हें कुछ क्योंकि ना मुझे डर है of being in a spot where people are like, तूने तो ये बोला था, तो फिर ऐसा झूठा दिखना, या being in a spot where people will question that. Is Basir scared of anything or anyone? मम्मी के अलावा? Just mom and my anger, which I've worked a lot on it and I think I'm good, bro. जब तक आप वो उंगली नहीं करोगे वो साइड आएगा ही नहीं. अब मैं खुश हूँ, मैं सेट पे आता हूँ, मैं घर जाता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं मुझे अच्छे से रखते हैं. थोड़ा है टेंट्रम्स होंगे मेरे, वो मैं पहले से ऐसा हूँ. मेरी माँ ने मुझे वैसा पाला है भाई. I like to live like that, so I only give spot to people who can understand that and work it out with me. ये तो नहीं है भाई जगह में. तुम्हें ह्यूमर समझ नहीं आ रहा, तुम बाहर. नहीं, हाँ ह्यूमर वाला सही है ना. I'm gonna use this in real life. या तुझे मेरी बातें समझ नहीं आ रही. तू निकल, तू रोम का है ही नहीं. Exactly. So you're from Hyderabad? Yes sir. So Hyderabadi biryani और मुंबई वड़ा पाव. Any day biryani, bro. Like vada pav. I'm a huge fan of the vada pav. हाँ. और मैं यहाँ बैठ के अपने सेट पे बोलता हूँ भाई 2 वड़ा पाव लेके आओ ना मेरे लिए. There's like a lot of lunch and this and like वड़ा पाव लेके आओ ना वड़ा पाव. So I love vada pav, but there's no comparison between the biryani that we have in Hyderabad. But yes, biryani any day. One line or one lesson that Basir would want to give to his 18-year-old self. Just one thing you want to tell him that future में ही होगा, but Yeah, so I feel like all my life I have looked around for people who I could call mine. Like मेरा एक ही हमेशा रहा है, I didn't believe in friendship. Okay. I still don't. I don't Okay. think friendship exists. It's just momentarily people come, people go. So all my life I looked for people that could be called mine, and उस process में I trusted a lot of people with a lot of emotions, a lot of जो भी हुआ हम लोग के मतलब growing up because we were new to the industry. हमको पता भी नहीं था हम क्या कर रहे हैं. Like रोडी स्प्लिट्सविला करके आए हैं and people started hitting us up, और जब तक ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर तो वर्ड ही नहीं था. People were like हम आपको इतने पैसे देंगे, आप ये करोगे and all that. I'm like अच्छा इंस्टाग्राम से पैसा भी बन सकता है. So that process of growing into the men and women that we are today, उस बीच में ना बहुत कुछ मैंने लोगों के साथ कमाया और गवाया है. तो ये प्रोसेस में मुझे एक ही चीज समझ आई कि you're the only one. So you will go back and tell your younger self that you're the only one. This is your life and you are gonna do it till the end. If you're alive, you gotta do it by yourself. You can't depend on people. You can't trust people with your work, with your money. Bro, मैंने बहुत गलतियाँ की हैं. Related, I could have been 10 times bigger than I am today. If I didn't do those things. We are products of our mistakes. Yes, sir. And I'm proud of it. चलो ठीक है. मैं बोल रहा हूँ ना, गिर के ही उठने में मजा आएगा. Exactly. So okay, Basir से ये सब बातें करी, but Basir, is there any crush, celebrity crush you have? A lot, man. I don't take a step back from telling someone that I have a crush on. I mean, this is how it It's should always be. healthy. Okay, tell me the latest one. जरूरी नहीं है कि आपको वो crush कुछ करना है, उसका कहीं लेके जाना हो. You just find It's a beautiful thing. Yeah. You know what? You're so beautiful. I just feel like you're so attractive. That's all. अब मुझे उसका कुछ नहीं करना. वो गए अपने घर, अपनी जिंदगी में busy. अभी recently सबसे last किसको बोल दिया? There was this person I shot with. She's from our ZTV के show only. Kumkum I shot with. Who's the lead? Rachi. Rachi.
was like, bro, you're so beautiful. Like, Yeah. too much. Like, मैं अटक गया थोड़ी देर के लिए. I was like, क्या है ये खूबसूरती? But yeah, that's it. I think we're good friends. We randomly talk on Instagram, but that's about it. Do you talk to her? Not like that, but yeah, just good interactions on Instagram. Sometimes replies to stories. Do you want to say anything to your fans of Kundli Bhagya since you have told them कि you guys are the bloody rock stars. You guys are the reason why I keep doing this shit. And I'm telling you, तुम लोग के लिए मैं करता रहूँगा. चाहे इधर हो किधर हो. I'm going to America. I've got a project lined up in America and Hollywood. Bigger things, bigger things. Yes, sir. All right, Basi, it was fun. मजा आया यार. Lovely, Good brother. fun. Time का पता ही चला. You guys should make this happen again and again. Yeah, man. See, his voice talking well. And all the best with everything coming your Thank you, way. man. You're an Thank amazing you. vibe. It Thank you, was man. lovely connecting, and I think this is gonna come out so much better. Please like, share, and subscribe the YouTube. Alright guys, thank you so much for watching this video with us, and I hope you guys liked what you see. So please like, share and subscribe to the Balaji channel for a lot more stuff. मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं. Thank you, Basi. Very good. Ex-host